moving towards Dr. Deepanjali Deshmukh, who will be enlightening us on mental health. She is MBBS, MD, and consultant psychiatrist at Prerna Hospital and assistant professor at Department of Psychiatry, MGM Medical College, Aurangabad. Over to you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Hello, everyone. Good evening. Good evening to all the volunteers. And good evening, Karandikar ma'am. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to talk to you. Every time participating in Unhide is always a fun. I could not attend because of some personal thing going on right now. But today, on the occasion of World Mental Health Day, World Mental Health Day was yesterday, but still I could not do anything else. So I'm really grateful to Karandikar ma'am to give me some opportunity to do something for the Mental Health Day. What I'm going to talk about is mental health or mental wellness. So this is such a broad topic that we can go on talking about it. But I'm sure that most of you must already be aware of most of the things because you are associated with a niche foundation, and this is a foundation which works excellently related to the mental health. But I would like to start with basic, and I have one disclaimer to make that I might sound bit repetitive because yesterday I saw on my social media that there was a flood of programs. So most of the thing might be bit repetitive, but please bear with me for next 10 minutes. So first thing I want to talk about is what do we mean by mental health or mental well-being. It's not just like WHO had made it very clear. Just absence of any mental illness is not being mentally well. Okay, they have given a very nice and beautiful definition in which they have mentioned about any person who is mentally healthy is able to reach to his or her own potential, can cope with the normal stresses of the life, is productive, and most importantly can contribute to the society. So all these things are to be taken into account when we talk about mental health. Why should we be talking about this issue? Because there are so many people, they are suffering from mental illnesses, and they are suffering in silence. Even if nowadays we see the trend is increasing, some people are talking about it. There are certain organizations like and certain people who have taken such efforts like Karandikar ma'am for the advocacy of mental illness and mental problems. But still it's not it's still not a mainstream thing. Means recently, even with the celebrity suicide that we saw, and after that whatever the statements were coming from other celebrities were not encouraging. Somehow that brought a whole conversation related to the suicide and mental health, I can say like 10 years backward. So in the light of recent whatever the incidents that has happened, I feel it has become more important that we should talk about mental health. And whenever somebody is spreading certain misinformation, it becomes very important. If you know that that thing is not correct, then you should correct them. Or if you find certain things as doubtful, so just go talk to some reliable person and get a valid information. Okay, that's why. So I think the discussion about mental health, mental illnesses, and how they happen, what can be the reasons for them, should happen every time. And that has become a need of ours because the misinformation that is being given to us is too much. And these are given by the very famous people also. uh, I would like to take this opportunity to talk about World Mental Health Day also. Every year, 10th October is celebrated as World Mental Health Day, and World Health Organization declares some theme every year. So this year's theme is related to the greater investment towards mental health. They have decided this theme considering the recent pandemic. This pandemic has affected everybody. For example, the students are affected because they have to stay indoor, and their whole schedule is disrupted. The healthcare workers, they have to go to their work in this pandemic situation, and they're worried that they can bring the disorder back at the home.
certain people, their businesses are closed, the certain workers, they have lost their job. So a lot of people are experiencing some or other psychosocial issues, and WHO has estimated that if the need for the mental health related resources would be increasing all over the world. The investment in the mental health sector is very limited. So this year they have taken this theme to increase the investment into the mental health related resources. So they have called that government should increase the programs related to mental health. Certain NGOs should take this opportunity to start new program and reach to more people. So what people like me and you can do for this? We can do one thing, that is we can increase the awareness by starting a dialogue. Just by starting a dialogue about it, we can pressurize the government. And nowadays, with our social media handles, if we talk about it, if we tag the people in the government, then by that we can create enough pressure. So we can use our Twitter handles, Facebook handles, whatever social media you people are comfortable with. But this opportunity should be taken and ask the government how much they are investing into the mental health and how they can improve regarding the investment in the mental health. And in our country, the investment in the health sector by government is very limited. So mental health is another issue. We can also donate to certain NGOs. If it's not possible for us to do directly anything, we can find out a good, reliable NGO and can donate to them, so that in a way we can also invest in a mental health. Another thing is, why should we be worried about mental health? Why? Because most of the time, these illnesses are not seen. Any person who is depressed, you cannot see and recognize कि okay ये depressed है. It can be like ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी को अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसको प्लास्टर दिखेगा और आपको दूर से ही समझ में आ जाएगा कि okay okay this person has sustained some injury. It's not like that with the mental illnesses. Mental illnesses are generally what I can say, these are the silent illnesses. A person can hide them very well, but they are there and a lot of people are suffering from them. Mental illnesses and physical illnesses, they have there is a huge correlation. It has been seen that the people who have mental illness, they are more prone to have physical illness, because certain mental illnesses, they affect our motivation. So जैसे जो healthy lifestyle होती है कि exercise करो, अच्छा खाना खाओ, not using drugs and all, ये जो सारी चीजें होती है, sometimes all these things are affected, these behaviors are affected, and because of that the illnesses, like these people are more prone to develop diabetes, hypertension. It has been seen. There are certain studies जिनमें ये भी पता चला है, Karandikar ma'am would agree that in the patient with the stroke, those who have depression, they have more complication compared to the patients of stroke who did not have depression. So there is a huge correlation between your mental health and physical health. These two are not different things. In fact, it is always said that there is no health without mental health. So it's very important that we all should be working towards mental health. The lack of mental health has a lot of social consequences also. Like there are certain problems on rise, like unemployment, broken homes, then drug abuse and drug abuse related crimes. All these things are the social implications of our mental health. And even if we feel that it might not be related to me, but somebody you care, somebody you are close to, might be having certain mental health related issues, and we all need to be aware about it. We all need to talk about it, and we all need to take care of our own mental health. So we have talked so much about mental health and ये होता है, but what should we do for it? So first of all, like I told you, there are so many myths that are prevalent in the society, and whenever I get chance to talk to anybody, I would always address all those myths, because even if one person if I can clear a doubt of one person's mind, and if that person can get access to the mental health, that becomes a very important thing for us.
So most important thing is that we need to do is to fight the stigma. Then certain myths that you must have heard all these comments that depression happens to the people with weak mind. Okay, so I would like to clear that thing that depression can happen to anybody. It's a proper neurobiological illness. There are certain chemicals in our brain, and when there is imbalance in those chemicals, then depression happens. Then a lot of people think that all these illnesses, the medications of these illnesses are very problematic than the illness itself. कि ये सारी नींद की गोलियां होती है, उनके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, वो गोलियों से किडनियां ही खराब होती हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स. Or I am sure कि you all must have heard about one or two these things. So I want to clarify that there might be certain medication जिनकी वजह से नींद आती है, but हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको नींद की तकलीफ होती है. So we give them certain medication जिनसे थोड़ा sedation होता है. But if the patient or relative clearly tell us that कि हमें नींद ज्यादा हो रही है, तो there are certain medication जिनसे ऐसा नहीं होगा. और ये medications काफी safe होती है. Even I am practicing psychiatry since last 4 years only, but I have given these medication to so many people, and I have not seen a single patient yet who had developed kidney failure or liver failure or whatever the things that have been said. So whatever the complications that are being told, that those are very rare, and these medications are generally very safe. So if any of you is aware that certain person needs mental health or mental illness treatment, or they should get access, then please encourage them. Please try to reduce all these myths. Then a lot of people feel that if I disclose my mental illness, then there might be then I might face problem at my workplace or somewhere. So I also want to clear that there are certain laws how to treat the people with mental illness, and nobody can discriminate against any patient on the basis of his or her diagnosis. So nobody has to be afraid of disclosing or getting treatment for mental illness because how the people will treat at their workplace. That should not this should not discourage any person from getting access to the treatment and getting access to the best treatment they can have. Okay, so these are certain myths. I would like to hear from you people also, if you have certain doubt or you have heard certain all these kind of information related to the mental illness, related to the psychiatrist, psychologist, psychotherapist. I would be very much happy to clear all your doubts. Lastly, all these things are very broad, but what I can do, you must have that question, what I can do to improve my mental well-being. Okay, so these are very simple things. I know you all must have heard these. There are so many YouTube videos and all everything going on. I might be a bit repetitive, but please bear with me. So there are certain simple things that you have to do. First thing is exercise. A routine, regular exercise, any exercise that you can do, that can help you to improve your mental health. It reduces the risk of mental illnesses. Okay, yoga, meditation, these are very good for your physical health as well as your mental health also. Then proper nutrition. Getting proper nutrition is very important for overall well-being of a person. Then having adequate sleep. So these three things are non-negotiable: your exercise, your nutrition, your sleep. Then there are certain other things like maintaining a journal, creating a to-do list. Then certain things like maintaining a gratitude journal, that writing 5 things that you are grateful for throughout the day, even on your worst days also. So that helps to keep you positive and keep you motivated. Then activity scheduling, planning and activity scheduling, that gives you some perspective. Because of this lockdown, some people might be staying at home and they feel very stuck. So activity scheduling and changing a bit of routine things can be helpful for them. Another thing I would like to stress is that even if certain things that you have to do routinely, that doesn't mean that those things have to be boring. You can just spice up a little bit. Means
Even if you have to cook, then in cooking also you can just do certain experiments. So routine doesn't have to be boring. uh, you can just experiment in your own way, whatever things you have, and just make your day a bit of exciting. Then spending quality time with your family, friends, even spending time with your pet. If whenever you are stressed, specifically the engineering people, I tell this to my sister also. She is engineer and she has to work a lot, and nowadays her work has increased since she is working from home. So whenever she is stressed, I advise her ki, yeah, you just play with a small child, or you just go and see a pet. That will help you to reduce some of the stress, and that helps her too. So if some of you have the access to that kind of thing, that can help you. Then spending time with your family members, talking to them, spending time with your friends, even if not possible directly, then virtually, whatever. Now you people are coming to Unhind and talking here, showing whatever talents you have. That is also one of the very important buster. So things like these can be very helpful. Then limiting social media use, that is very important, because nowadays since we are at home, wherever we are going, that has reduced. The social media consumption has increased, and it is filled with lot of negativity. So I would say that you should limit use of it, or at least you should decide how much you want to use, how much time you want to spend. All these things, depending upon your profession, you can decide how much time you can spend on social media. Then taking break whenever needed. This thing I have seen with lot of work from home people, that because it's work from home thing, they are working from morning to night. So it's not necessary that you have to keep on doing that thing. You should be able to tell your organization or your bosses that okay, I'm not able to work more than this, and I'm taking break for some time. Or for anybody, even for the housewives, if since they are also in between, the maids were not coming right now also, due to fear, certain people are not calling maids. So in such a homes, if you are not able to keep up with all the work, it's not necessary to have a showroom like home. You can have a simple home, or you can ask help from all the family members. So take a break whenever you feel like doing it. Then lastly, I would like to say is that being compassionate towards your own self. Okay, just try to be a bit kinder to yourself, and don't beat yourself, because this lockdown and this whole thing is hard for everyone. And a lot of people are saying like this year is just to be alive, that's it. So there are certain people who are doing lot of things. They have developed some hobbies, they are doing posting certain pictures on social media. So that's okay. And even if you just wake up, do your whatever job you are doing, and go back to sleep, that is enough too. So this pandemic is not a race. Just be kind to yourself. And again, I would like to say, just take care of your own mental health and mental health of everyone you are close to. And I think I would stop over here. If somebody wants to talk more about these issues, they can ask question, or I don't know, means we can discuss it later also. So thank you so much, Karandikar ma'am, and everybody at Unhind. Thank you, Prakhar. Over to you. Thank you so much, ma'am, for discussing all such important points related to mental health. And I am also an engineer, and I will definitely use your young child therapy for stress relieving. It was such a wonderful session, and you started one of the dialogues for the mental health from here only. So it was very nice to see that. Thank you very much, ma'am. Now, if anyone is having any questions to ma'am, they can ask. Yes, ma'am. Taking towards our session, now I would like to call the director of our NGO, Dr. Purnima ma'am, who is a consultant neurologist in Pune and Nagpur, a neurologist with a holistic approach who enjoys counseling and thinks it is an integral part of treatment in neurology. She is passionate about emotional fitness and personal growth, an active writer, singer, and artist. She
works diligently for social engineering through the social profit company Niche Advocacy Foundation. Over to you, ma'am. Prakhar, and thanks to everyone who's attending today. So on the occasion of World Mental Health Day, nowadays have been declared जो भी चीजें important लगती है दुनिया में तो कोई ना कोई जाके उसके लिए एक डे बना लेता है. So WHO has made this mental health day क्योंकि हमारा ध्यान उनको चाहिए मेंटल हेल्थ की तरफ, उनको खींचना है मेंटल हेल्थ की तरफ हमारा ध्यान. नाउ हु डज WHO डिसेबिलिटी असेसमेंट स्केल. सो दिस इज अ स्केल कि कोई भी बंदा या बंदी डिसेबल्ड है या एबल है, एबल वर्सेस डिसेबल. सो इफ वी वांट टू असेस द डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम कैसे उसको मेजर करें. तो WHO के सामने ये सवाल था. तो बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग डिसेबिलिटी की स्केल्स होती है. पार्किंसंस के लिए अलग डिसेबिलिटी स्केल, पैरालिसिस हुआ तो अलग डिसेबिलिटी स्केल, फिर अगर एम्पुटेशन हुआ है, एक लिम्ब काटनी पड़ी किसी कारण से, गैंग्रीन या जो भी है, तो उसकी अलग डिसेबिलिटी स्केल है. तो ये अलग अलग बीमारियों की डिसेबिलिटी स्केल्स अलग है और वो सब डिसेबिलिटी स्केल्स फिजिकल डिसेबिलिटी पर फोकस करती है. तो WHO ने सोचा कि हम क्यों ना एक सिंगल स्केल बनाए डिसेबिलिटी की, जो किसी भी डिजीज कोई भी हो, वी शुड बी एबल टू मेजर द डिसेबिलिटी. सो WHO मेड दिस WHO DAS, हु डास 2.0. सो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे लाइफ के डोमेन्स है, तो 6 डोमेन्स, 6 हिस्से हमारे लाइफ के, जैसे क्या हम हमारी एक्टिविटी कर सकते हैं, खुद की डेली एक्टिविटीज जैसे नहाना, खाना, ये सब कर सकते हैं क्या, फिर क्या हम अपने हाथ पैर हिला सकते हैं, ये सब तो देखा ही उन्होंने. मगर डिसेबिलिटी स्केल में फॉर द फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस्ड सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो आप में से कोई भी जो भी साइकोलॉजी करने वाले यहाँ पे है, यू कैन गूगल इट, हु डास 2.0, WHO DAS 2.0. एंड in the 6 domains they have assessed कि क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक है, क्या तुम अपने आसपास के सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट लेते हो. So all these factors, so out of the 6, almost a little more than 50% factors are psychosocial factors to determine whether a human being is able or disabled. So even though you may be physically totally fit, but you're not taking interest in your environment, you're sitting quietly, you're a loner, you're not interacting, you're not contributing to anything in the world, then your physical ability has no value. So disability includes, तुम एबल हो या डिसेबल हो, तो भले ही तुम्हारा एक हाथ एक पैर काम नहीं करता, मगर तुम ऑफिस जाते हो, तुम ऑफिस वर्क अटेंड करते हो, तुम अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, in spite of being paralyzed on one side. There are people like that. So in which case your disability is lesser than the person who is completely physically all right but not doing anything at all. So WHO DAS, so this has defined able versus disabled with whether you are mentally stable and whether you are socially interacting with your environment. So health is, by WHO, health is defined not as an absence of disease, but by the presence of a sense of well-being. और disability और functionality के definition में mental stability and psychosocial well-being का equal importance है physical health के जितना ही. तो ये हुई मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस की बात. अभी आज ही मुझे एक फॉरवर्ड, मेरे एक साइकेट्री के स्टूडेंट ने मुझे एक फॉरवर्ड भेजा व्हाट्सएप पर, दैट सम डॉक्टर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हैज रिटन दैट माइंड इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी. माइंड इज नॉट, we invented the concept of mind for our own understanding of ourselves, and my mind is actually not a separate entity. So he is right, because mind is not an organ. जैसे उंगली है, अंगूठा है या 5 उंगलियां है, वैसे माइंड को हम ऐसे उंगली से नहीं दिखा सकते कि ये माइंड है. सो व्हाट इज माइंड? माइंड इज एन एप्लीकेशन. जैसे हम फोन पे एप्स डाउनलोड करते हैं, वैसे माइंड एक ऐप है हमारा जो हमारी ब्रेन में बसा हुआ है. ब्रेन इज द main area where the mind exists.
So it is not a place, it is not an organ, but it is a program, it is a software, it is an application. और उसके क्या हिस्से हैं? उसके हिस्से हैं न्यूरल नेटवर्क्स, नर्व सेल्स एंड साइनेप्सिस, न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये सब चीजें उस माइंड के हिस्से हैं. और कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइंड. तो लर्निंग जो होता है हमारा, आवर माइंड लर्न्स. सो हाउ डज द माइंड लर्न्स? तो ऐप आपने डाउनलोड किया, मगर वो ऐप आपके यूज से चेंज होता जाता है. सेम थिंग, द माइंड चेंजेस विद द वे वी लिव आवर लाइफ, विद द वे वी लर्न थिंग्स. और जब हम नई चीजें सीखते हैं तो नए कनेक्शंस बनते हैं माइंड में मतलब ब्रेन के सॉफ्टवेयर में. एंड ऑफ कोर्स माइंड इज लिंक्ड टू फिजिकल हेल्थ, क्योंकि माइंड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, माइंड इज इनसाइड द बॉडी. माइंड और बॉडी हम में ही बसे हुए हैं. सो माइंड एंड बॉडी इज अ पैकेज, इट्स अ पैकेज डील. ये मन यहाँ शुरू हो गया और बॉडी यहाँ खत्म हुई, ऐसा हम नहीं कह सकते. सो माइंड एंड बॉडी दे आर लाइक स्पंज के अंदर जैसे पानी रहता है, वैसे ही बॉडी के अंदर माइंड रहती है. So mind is of course linked to physical health. There is a beautiful video on YouTube. आप लोग इतना सब YouTube देखते होंगे. So there is this psychologist, psychoanalyst from USA, and she works basically on personality disorders. And she has one video. I was quite impressed by what she said. She said कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता. कभी कभी मन हमसे झूठ बोलता है, हमको बहलाता है, फुसलाता है कि अरे नहीं पूर्णिमा, ऐसा नहीं हुआ होगा, तुमने गलत सोचा उसके बारे में, वो एक्चुअली अच्छा है, तुमने ऐसा फील किया. एंड देन फिर मैं सोच लेती हूँ कि हाँ मैं ही गलत थी. सो माई माइंड कैन समटाइम्स, इफ वी आर अनअवेयर, इफ वी आर नॉट लिसनिंग टू आवर इनर वॉइस, देन आवर monkey mind, as what they call in meditation, they call it as a monkey mind. जो हमारा ऊपरी बहुत चंचल मन है, वो सब चीजों को रिस्पॉन्ड करता है. So our monkey mind can very easily cheat us, but our body doesn't lie. So body is picking up signals from the mind, and it is picking up signal from the entire mind. हमारा छुपा हुआ मन, लुप्त मन, सुप्त मन, and all that. So the body, because everything is in one place, and because of that the body picks up all these signals, and then we have what is called as psychosomatic illnesses. Psychosomatic illnesses exist, है ये बीमारियां दुनिया में और बहुत सारी हैं. As neurologists we are exposed to psychosomatic illnesses in our patients. तो लगभग 20% पेशेंट्स ऐसे होंगे ओपीडी में जिनकी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए हमें कभी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता. तो हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, हम जो भी हमारा ज्ञान है किताबों से मिला हुआ, बाकी के पेशेंट्स से मिला हुआ, वो सब यूज करके हम पेशेंट्स को चेक करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनके सारे हाई फाई इन्वेस्टिगेशन सब करवा लेते हैं, मगर कभी फिर भी 10 to 20% लोगों में हमको कोई भी जवाब नहीं मिलता. एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वेदर this is a psychosomatic illness. Now psychosomatic illness has a very लोग जब बोलते हैं कि अरे ये तो psychosomatic है, तो तुरंत if a doctor labels a disease as psychosomatic, तो तुरंत उसकी तरफ देखने का नजरिया बाकी डॉक्टर्स का भी बदल जाता है, पेशेंट के रिश्तेदारों का भी बदल जाता है, और पेशेंट को भी लगने लगता है कि अरे मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तकलीफ हो रही, उसका क्या, मुझे कुछ नहीं कैसे हुआ होगा. So psychosomatic illness doesn't mean कुछ नहीं हुआ. Psychosomatic illness means कि इतना गहराई में कुछ हुआ है कि उसकी वजह इतने ऊपरी लेवल पे नहीं मिल सकती. So now neurologists have started labeling these diseases as functional neurological disorders. So functional neurological disorders ये वो बीमारियां हैं जिसमें ऑर्गेनिक कॉज कुछ मिल नहीं रहा. मतलब MRI बार नॉर्मली आते जा रहा है, मगर फिर भी उस व्यक्ति को बीमारी तो है. So the person has a problem, the person has an issue with the way he or she is living his or her life. Maybe उस व्यक्ति को हेडेक्स हो रहे हैं जरूरत से ज्यादा, मे बी उस व्यक्ति को मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. सो मूवमेंट डिसऑर्डर्स में सबसे आसान समझाने के लिए मूवमेंट डिसऑर्डर है कंपन.
कंपन या फिर ट्रेमर्स. सो ट्रेमर्स मतलब हाथ कांपने लगते हैं, कभी कभी आवाज में कंपन आ जाती है, तो आवाज में बोलते बोलते ऐसे 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 कांपने वाला ही आवाज निकलेगा. सो दैट इज वॉइस ट्रेमर्स. हेड नेक ट्रेमर्स, ऐसे 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 हिलना होता है. चिन ट्रेमर्स. सो ट्रेमर्स आर द सिंपलेस्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि सब ने किसी ना किसी को कांपते हुए देखा है. एग्जाम में भी जब हमारी टर्न आएगी, हमसे पहला रोल नंबर अंदर गया है वाइवा के लिए, और हमको अंदर से धक 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 शुरू हो जाता है, हाथ ऐसे रखे तो वी सी दैट दे आर ट्रेमलिंग. सो ट्रेमर्स आर very responsive to emotional changes, very responsive to emotional changes. So whenever we see patients of movement disorders, especially tremors, we have to counsel them for being able to be more emotionally calm, not becoming anxious about their tremors. सो एनी टाइम अगर एग्जाम के कंपन टेंशन से बढ़ता है, तो जिसको कंपन की बीमारी है वो भी तो टेंशन से और बढ़ेगी. सो इट गेट्स एम्प्लीफाइड. सो एंजाइटी एम्प्लीफाइज ट्रेमर्स, एंड दिस इज सीन इन मेनी अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स सच एज डिस्टोनियाज. इवन पार्किंसंस डिजीज जो है वो मूवमेंट डिसऑर्डर है, वो हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, मतलब उसमें मूवमेंट कम हो जाती है. ट्रेमर्स ये हाइपर काइनेटिक है, तो उसमें मूवमेंट ज्यादा हो रही है जरूरत से. पार्किंसंस में मूवमेंट जरूरत से कम हो जाती है. तो इसमें भी पार्किंसंस के पेशेंट्स में भी हम एंजाइटी और डिप्रेशन देखते हैं, और दवाइयों के साथ साथ उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी हमने संभाला अलग अलग तरीकों से, नॉट जस्ट विथ मेडिसिन बट इवन बाय काउंसलिंग, बाय सेंडिंग देम फॉर फिजियोथेरेपी, बाय मेकिंग देम अटेंड सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स. विथ ऑल दीज देयर एंजाइटीज एंड देयर डिप्रेशंस कैन बी एड्रेस्ड. और एंजाइटी डिप्रेशन को एड्रेस करने से उनकी बीमारी का जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसको जरूर हम ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. एपिलेप्सी. एपिलेप्सी में भी हम साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स देखते हैं. साइकोजेनिक मतलब जिसका जेनेसिस, जिसका उगम मन में है, जिसका उगम मन से है, वो साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक, मतलब उसको मिर्गी नहीं है मगर मिर्गी जैसे दिखने वाले सीजर्स आ रहे हैं. सो साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स. मैं जब ऑस्ट्रेलिया में गई थी, मेरे फेलोशिप हुई ऑस्ट्रेलिया में, एंड देयर वी यूज्ड टू डू वीडियो ईईजीज फॉर 4 पेशेंट्स एवरी वीक. हर पेशेंट का ईईजी, 4 पेशेंट्स मंडे मॉर्निंग को आते थे एडमिट होने, और शुक्रवार की दोपहर तक उनका ईईजी होता था. 4.5 दिन उनका ईईजी कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग फ्रॉम देयर स्काल्प यूज्ड टू बी डन. And every week, out of the 4 patients, 1 patient used to be non-epileptic. So this, even in the best of centers for refractory epilepsy मतलब जो epilepsy ठीक नहीं हो रही है दवाइयों से. 2 साल हो गए, 2 से ज्यादा दवाइयां ट्राई हुई है, मगर फिर भी वो मिर्गी ठीक नहीं हो रही है. ऐसी मिर्गी को रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, मतलब ठीक ना होने वाली मिर्गी या फिर दवाई को रिस्पॉन्ड ना करने वाली मिर्गी, ऐसा कहते हैं. तो जो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी को असेस करने वाले सेंटर्स है, त्रिवेंद्रम में है, केईएम में है, नागपुर में सिम्स में है. तो ऐसे सेंटर्स का हम जब डेटा देखते हैं तो अराउंड 20 to 25% पेशेंट्स turn out to be turn out to be non-epileptic. तो ये नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनका उगम मानसिक स्थिति से होता है. सो इट कुड बी डिप्रेशन, इट कुड बी अ डीप सीटेड फीलिंग दैट ऑफ निग्लेक्ट, ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. इट कैन बी दैट घर पे कुछ अब्यूज चल रहा है उनका, और वो एक्सप्रेशन नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स से निकल आ रहा है. My youngest patient of non-epileptic seizures, I had started my practice in 2006, and at that time, within 2 months, a young girl of 7 years got admitted under me, and she had already been evaluated in 2 places, and I was working in a tertiary referral center, and we evaluated her, we did her video EEG, and we found her epileptic seizures were non-epileptic. Her seizures were non-epileptic, and she was in fact pretending to have seizures because she wanted her father and mother to pay attention to her. And it was quite shocking for me because मेरी नई नई प्रैक्टिस थी, मुझे लगा कि नहीं, इतने छोटे बच्चों में कैसे होंगे नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, मगर हुए थे. द साइकोलॉजिस्ट वाज amazed. The psychiatrist also we had involved, and he was also amazed कि अरे
ऐसे कैसे? एंड देन वी वेंट थ्रू हर स्टोरी एंड इट वाज अ वेरी interesting story that we came to know from her parents and from her later on. तो ये इतना डीप सीटेड होता है प्रॉब्लम कि कभी कभी नार्को एनालिसिस करना पड़ता है. मतलब पेशेंट को नींद लगे, नींद की ट्रांस स्टेट में इंजेक्शन द्वारा भेजते हैं और उस ट्रांस स्टेट में फिर पेशेंट से बातें करते रहते हैं और उस ट्रांस स्टेट में पेशेंट इज नॉट ऑन गार्ड, वो थोड़े आराम से होते हैं, तब वो अपने मन की सच्चाई कभी कभी बता देते हैं. सो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए कभी कभी नार्को एनालिसिस, और नार्को एनालिसिस करते करते ही नार्को थेरेपी दी जाती है. सो मूवमेंट डिसऑर्डर्स, नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, इंसोम्निया, नींद की बीमारियों में बहुत सारा एंजाइटी का एलिमेंट है. सो सेकेंडरी इंसोम्नियाज में मतलब किसी और वजह से नींद नहीं आ रही है. प्राइमरी इंसोम्निया मतलब अपने आप ही नींद की बीमारी है, नींद नहीं आ रही है तो फिर उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट. मगर सेकेंडरी इंसोम्नियाज में डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सेकेंडरी इंसोम्निया. कि है प्रॉब्लम डिप्रेशन का, है प्रॉब्लम एंजाइटी का, चिंता की बीमारी, और उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है. हेडेक, स्पेशली माइग्रेन हेडेक्स एंड टेंशन टाइप हेडेक्स, तो इसमें भी लाइफस्टाइल का और मनस्थिति का बहुत बड़ा हाथ है. और मनस्थिति अगर अच्छी नहीं हुई तो हेडेक, कोई भी प्रकार का हेडेक हो, माइग्रेन हो, टेंशन टाइप हो, तो बोथ दीज हेडेक्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द इमोशनल चेंजेस इन द पर्सन. सो दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने बताए. मगर स्ट्रेस बाकी बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है. जैसे मैंने कहा कि ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर माइंड इज सिचुएटेड, बट देर इज अ होल फील्ड ऑफ साइंस कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी. साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और एंडोक्रिनोलॉजी. तो ये 4 चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर को, हमारी मनस्थिति को डिक्टेट करती है. एक तो नर्वस सिस्टम तो है ही, वो तो हार्डवेयर है हमारे माइंड का. फिर माइंड का सॉफ्टवेयर है, वो आ गया साइकोलॉजी में. और फिर इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मतलब हमारी प्रतिकार शक्ति की जो संस्था है हमारे शरीर में, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो संस्था है, तो वो भी जुड़ी हुई है हमारे मनस्थिति से. व्हाइट ब्लड सेल्स सब जगह घूमती है ना, ब्रेन में भी घूमती है. ब्रेन के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की कजिन सिस्टर्स बसती है, उनको बोलते हैं हम माइक्रोग्लाया. सो ब्रेन के अंदर कुछ पेशियां हैं जो रिलेटेड है हमारे पूरे शरीर में घूमने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स से. और ब्रेन के अंदर ही देर इज अ होल ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा का इंचार्ज ब्रेन में बसा हुआ है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को, पैराथायराइड ग्लैंड को, कॉर्टिजोल को, एपिनेफ्रिन को. एपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिजोल आर हार्मोन्स विच आर रिलेटेड टू स्ट्रेस. अगर भागना है कहीं से तो एपिनेफ्रिन की जरूरत है. जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ती है शरीर की तब कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है. कॉर्टिसोल मतलब स्टीरॉयड हार्मोन्स है जो शरीर बनाता है. So these are steroids which are manufactured by the body, and these hormones are all, even our sex hormones, testosterone in males and testosterone and estrogen progesterone in females. So in females also there is some amount of testosterone. So these hormones are also under control of pituitary gland. Pituitary gland is at the base of the brain. मतलब ये अगर brain रहा तो इसके नीचे pituitary gland है, just उसको touching. और pituitary gland के ऊपर है hypothalamus. So hypothalamus is inside the brain. It is in the center of the brain, and hypothalamus is very deeply connected to the limbic system. And limbic system is the emotional brain. So all the hormones are very closely connected to our emotional state. So psycho, neuro, immuno, endocrinology. और इम्यूनिटी क्या क्या कंट्रोल करती है? इम्यूनिटी कंट्रोल करती है इन्फेक्शंस को. इम्यूनिटी जूझती है इन्फेक्शंस से. इम्यूनिटी जूझती है हमारे बॉडी में अपने आप शुरू होने वाले कैंसर से. तो अगर शरीर में कहीं कैंसर शुरू हुआ है ना, तो बहुत सारे हमारे WBCs वहां पहुंच के उस कैंसर को खत्म कर देती हैं. So when the immune system starts failing, we will have unnecessary infections, we will have unnecessary cancer-like illnesses.
And what else does the immunity do? The immunity sometimes backfires. Autoimmunity, that means जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है तभी भी हमारे इम्यूनिटी को गलत फहमी हो जाती है कि बीमारी है, और फिर वो ऑटो इम्यून, अभी कोविड में जो पेशेंट्स डिटेरियोरेट होके डेथ जिनकी हो रही है, मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर बिकॉज ऑफ इम्यून स्टॉर्म. The virus is not killing those patients. The patient's own immunity, which is getting agitated in response to that virus, that immunity is making them feel breathless, and that immunity is causing respiratory failure. So it is the immune storm which is causing problems. So immunity को balance में रहना बहुत जरूरी है, और immunity का बहुत नजदीक का नाता है हमारे mental health से. हमारे मेंटल हेल्थ से बहुत गहरा नाता है. एंडोक्रिनोलॉजी, जैसे हम सब जानते हैं कि टेंशन आया तो डायबिटिक पेशेंट की शुगर बढ़ती है. तो शुगर क्यों बढ़ती है? बिकॉज स्ट्रेस कॉजेज चेंज इन द इंसुलिन लेवल्स, एंजाइटी कॉजेज चेंज इन द इंसुलिन लेवल्स, and once insulin levels change, the sugar is going to go haywire. कोलेस्ट्रॉल बदल सकता है हमारे स्ट्रेस की वजह से. तो स्ट्रेस से क्या क्या नहीं हो सकता. तो हाउ कैन वी सेपरेट द माइंड फ्रॉम द बॉडी? The mind and body are connected. कभी कभी आपका मन आपको रिझाएगा, मनाएगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, मगर आपके शरीर को मालूम है कि आपके ऊपर स्ट्रेस है. So whenever I ask a patient कि कहीं स्ट्रेस तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है, अगर कोई पेशेंट बहुत जल्दी बोलता है ना कि नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, इतना जल्दी जवाब देता है कि हमको पता चलता है कि पेशेंट हैज स्ट्रेस, बट पेशेंट इज इन डिनायल. और ऐसे पेशेंट को ज्यादा संभालना पड़ता है, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम उसको टेंशन है कि नहीं स्ट्रेस वेस मैं नहीं लेता. ऐसा कौन है दुनिया में जो स्ट्रेस नहीं लेता? सो इफ यू आर इन डिनायल, देन योर माइंड इज चीटिंग यू एंड योर बॉडी इज रिएक्टिंग थ्रू फिजिकल इलनेसेस. सो नाउ देर इज दिस, अभी लॉकडाउन हुआ नहीं तो हमारे यहाँ फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी इन 6 महीनों में. So an international society for functional neurological disorders is being started, and that first I was about to pay my money for being a founder member of that society, and we were going to have the first conference now, but that whole thing has got postponed. Instead of that, here I am sitting and talking to you about functional neurological disorders. So बहुत सारी neurological, क्योंकि mind and brain एक ही जगह पे है ना, hardware software, mind is the software and the nervous system is the hardware. So we as neurologists, we are exposed to neurological problems जिनमें cause नहीं मिलता, और ये psychosomatic illnesses कहे जाते थे पहले, अभी उनको हम बोलते हैं फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. और जब हमको नहीं समझता कुछ कि अरे नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो यूजुअली व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू इमीडिएटली सेंड टू साइकियाट्रिस्ट. बट नाउ वी फील दैट वी शुड टेक सम ओनर्स, वी शुड इवन एज न्यूरोलॉजिस्ट, आई हैव ऑलवेज बीन अ न्यूरोलॉजिस्ट हु काउंसल्स more and keeps the prescription short. So now all over the world, people are feeling, neurologists are feeling that yes, we have to be able, we have to learn the skills of going a little bit into details for this. And here we do take help of psychiatrists like Dr. Deepanjali, Dr. Abha is also associated with us, Dr. Sushil, Dr. Arvind Panchanadikar. So all our psychiatrist colleagues, we take their help. Narco analysis अगर करना पड़ा तो वो psychiatrist ही करते हैं, क्योंकि किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल, जैसे सर्जन का स्किल रहता है सर्जरी करना, वैसे साइकियाट्रिस्ट का स्किल रहता है सवाल पूछना. सो साइकियाट्रिस्ट्स एंड लॉयर्स आर 2 प्रोफेशंस हु आर ट्रेन्ड टू आस्क क्वेश्चंस. सो साइकियाट्रिस्ट की वो स्किल है कि वो सही सवाल पूछते हैं, और एक सवाल के बाद दूसरा कौन सा पूछना है ये उनको मालूम रहता है, so that they will help you to reach the depths of your own mind and find out that what was going wrong inside your mind, so that that problem, original problem can be identified. Once that can be identified, आपको उससे डील करने की स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, और वो स्किल्स बढ़ाने के बाद once you are able to face that problem, once you are able to tackle that problem, then you will be able to
डील विद दैट प्रॉब्लम, और तब जाके आपका जो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक इलनेस, आपका डायबिटीज है, आपका इंसोम्निया है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो भी है, फिर जाके वो कंट्रोल में आने लगेगा. तो अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको डिप्रेशन है, first thing is to admit it to yourself, because otherwise your body, remember, your body is watching you, it is the policeman. बॉडी को सब समझ में आ रहा है, तो आप भले ही 10 लोगों को बताते घूमेंगे कि मुझे टेंशन नहीं, मुझे टेंशन नहीं, मुझे कभी डिप्रेशन नहीं आता, मगर आपके बॉडी को पता चल गया है, और कहीं ना कहीं या तो आपको डायबिटीज शुरू होगा, या आपको मोटापा शुरू होगा, या आपको नींद नहीं लगेगी, या आपका ब्लड प्रेशर अनरेगुलेटेड हो जाएगा. सो seek professional help whenever you want. We are all there to help you, and remember that mind and body, yes, they are linked. कैसे नहीं linked होंगे, एक ही जगह पे हम बसे हैं, इसी फ्रेम में माइंड है, इसी फ्रेम में बॉडी है. एंड एज आई सेड, साइको, न्यूरो, इम्यूनो, एंडोक्रोनोलॉजी, तो पूरे शरीर में माइंड घूम रहा है, हमारा पूरे शरीर में माइंड है, क्योंकि इम्यूनिटी पूरे शरीर में है, हमारे हॉर्मोन्स पूरे शरीर में है. तो दिस इज हु वी आर थिंकिंग इंडिविजुअल्स हु फील, एंड वी आर फीलिंग इंडिविजुअल्स हु थिंक. वी थिंक एंड वी फील, सो बोथ दीज थिंग्स आर देयर. एंड फीलिंग्स, एंटोनियो डमाजियो नाम से एक न्यूरोलॉजिस्ट है, एंड he has worked a lot on feelings versus emotions. And emotions, he says, are some things which happen immediately. अचानक खुशी होना, वो तो डॉग को भी होती है, कैट को भी होती है, शेर को भी होती है, घोड़े को भी होती है. अचानक दुख होना, अचानक गुस्सा आना, these emotions are there even in animals. But feelings, love is a feeling, loyalty is a feeling. So these feelings are what humans are capable of, and feeling they are not just emotions, they are emotions with some thought behind them. So feelings are what humans are capable of, and of course some animals are supposed to have loyalty, empathy, especially dogs and horses. So, but human beings have a vast rainbow of feelings. So it is not just emotions that we have, we also have feelings, and feelings which can become difficult to control and manage. And that's why if required, याद रखना कि अर्जुन को भी मदद की जरूरत थी जब उसको डायलेमा था. So everybody needs help. I need help. You need help. There is no one in this world who doesn't need help. And asking for help is a sign of self-awareness. And as Dr. Deepanjali said, that mental health means having the opportunity and the ability to reach your maximum potential, self-actualization. And that is what niche advocacy works for. Niche stands for N for neuroplasticity, I for individual, CH for community health, and E for education. So neuroplasticity for individual and community health, education, and advocacy. So we are advocates for positive personal change. So we are advocates for positive personal change, and that is what Niche Advocacy Foundation stands for. So I end my talk here. Thank you so much, ma'am, for manifesting such an important information.